तो एथिक्स इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड जीएस पेपर 4 अपने आप में एक कंप्लीट पेपर है मेंस के लिए। इस 250 नंबर के पेपर के अंदर यूपीएससी का सिलेबस क्या है, थोड़ा सा पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो एक क्लैरिफिकेशन हमें देगा कि किस तरह से इस कंपोनेंट की तैयारी करनी है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद दैट। So I've already shared this particular document with you in your WhatsApp group. Okay. So within this, there is a particular instruction that is to be carefully read, जो UPSC में दी है. This paper will include questions to test the candidate's attitude and approach to the issues relating to integrity, probity in public life, and his problem-solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with the society. Questions may utilize the case study approach to determine these aspects. The following broad areas, they haven't said that these are specific things that they will ask. They are the broad areas which will be covered. So this is the direction. Now, what they are doing year on year basis is every year your question paper on ethics is divided into two parts. First part carries questions and answers approach, Q&A. Okay. And the second part is about case studies. 50% of marks are in this category. 125 marks के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, 125 marks की केस स्टडीज आती हैं। केस स्टडीज में जैसे आप पहले समथिंग लाइक रेफरेंस टू अ पैराग्राफ या कॉम्प्रिहेंशंस आप सॉल्व करते थे, कुछ वैसा ही है। यहाँ पे थोड़ा सा मॉरल एप्टीट्यूड टेस्टिंग है, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, वो भी टेस्टिंग साथ में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में ये होता था कि जो लिखा गया है उसी के अंदर से आंसर देना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको अपनी जो बेसिक स्टडी आप करोगे उसी के साथ रिलेटेड केस स्टडीज आएंगी, जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे और उन्हीं के बेसिस पे आपने आगे आंसर्स लिखने हैं। सिलेबस में अगर इसको देखा जाए तो इसको दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। टोटल फर्स्ट चैप्टर है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, सेकेंड है एटीट्यूड, थर्ड है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, फोर्थ इज इमोशनल इंटेलिजेंस, फिफ्थ इज contribution of moral thinkers and philosophers from India and the world. यहां तक it is more philosophical in nature, पहले 5 जो यूनिट्स हैं। 6वां यूनिट जो है पब्लिक सर्विसेज, वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही टॉपिक है। ठीक है, तो उसी में से ये चीजें उठा के यहाँ पे डाली गई हैं। देन प्रोबिटी इन गवर्नेंस, so this is again very much of a chapter coming from public administration. Equality of service delivery, citizen charter, code of conduct, code of ethics, सारे पब के टॉपिक्स हैं। आरटीआई जैसे आप गवर्नेंस में भी पढ़ते हो आजकल। ठीक है, देन केस स्टडीज ऑन दी अबव। सो टोटल हमारे जो पढ़ने वाले काम हैं वो 7th यूनिट तक आते हैं। 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स हैं और 5 इसमें फिलोसफी के टॉपिक्स हैं अगर देखा जाए तो। क्वेश्चंस थोड़े से देख लेते हैं किस तरह से आ रखे हैं। फॉर एग्जांपल, स्टेट द 3 बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड ब्रिंग आउट देयर इंपॉर्टेंस। तो पहले तो 3 बेसिक वैल्यूज बताओगे कि ये यूनिवर्सल होती हैं हर जगह, किसी भी सिविल सर्विसेज में ये वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि अगर ये वैल्यू है तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये है तो क्या इंपॉर्टेंस है, लाइक दिस। तो ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन आया। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट विद सुटेबल एग्जांपल। व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक इंटरेस्ट एंड व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द सिविल सर्वेंट्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट। इस तरह से अलग अलग इसमें क्वेश्चंस हैं। डोंट वरी अबाउट दैट मच, अभी हम इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली डील करेंगे। व्हाट आई विल बी डूइंग फॉर यू इज हम इसको सेक्शन वाइज उठाएंगे, जैसे कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो पहले इसका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे हर टॉपिक के अंदर। फॉर एग्जांपल, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स है क्या। ठीक है, टॉपिक क्या है बेसिकली। वंस यू हैव द इंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, फिर उसके साथ पर्टिकुलर टॉपिक में यूपीएससी ने क्या पूछा, उन क्वेश्चन आंसर्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। दैट वे यू विल बी एबल टू राइट इट। ये टॉपिक प्रीलिम्स में नहीं आता कहीं पे भी, इट इज थॉरली अ मेंस टॉपिक और उस एंगल से ही इसको पढ़ना है। यू हैव टू बी फ्रॉम द वेरी डे वन
thinking about the answer writing in this, कि what will I write when a question comes upon this topic. That has to be your core. Okay. So ये डॉक्यूमेंट आपके पास है, पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस इसमें हैं, उनको देखना शुरू कीजिए, हैव अ लुक. एंड जो 2018 तक के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हैं. बाकी सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं अलग से, उनमें 2019, 20, 21 के भी क्वेश्चंस. ओके. तो नाउ टेकिंग यू टू द व्हाइट बोर्ड. सर, हाँ जी. तो ये वाला डॉक्यूमेंट दोबारा शेयर कर दूं क्योंकि ये शायद नहीं है. श्योर, विल डू दैट. थैंक यू सर. Okay. So let's go to the whiteboard and let's start working on this topic, ethics, integrity and aptitude. थोड़ा सा बेसिक लेवल पे पहले चीजें समझ लें, उसके बाद we can deal with it in a much more academic terms. Okay. नहीं तो ना वो दिमाग में ज्यादा आइडियोलॉजिकल बेस बन जाएगा और फिर कुछ होगा है नहीं उससे. ठीक है. So what is ethics? If we just simply talk about it, ethics अगर मैं बहुत आम साधारण आदमी की भाषा में बोलूं ना, तो it is what is socially desirable. Whatever is ethical is something that we consider as socially desirable. आम जनता को क्या चाहिए, हम उस हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि हम एक सोशल लाइफ में रहते हैं. सोसाइटी में रहते हुए we have to be considerate towards what will people think, what will people feel, what will people do. In that think, feel and do, we also think, feel and do. Okay. So that way we are conducting ourselves, and therefore, there is one definition of ethics where we say it is a science of social conduct. Science of social conduct. A very simple definition can be given like this. Okay. अब जब हम सोशली अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू अ फ्रेंड्स पार्टी, or you go to a wedding, or you go to meet some of your relatives. What are you trying to do at that point of time? You're trying to rationalize various elements. जब आपके कोई सामने आता है, आप सोचते हो अब मैं इसके पाँव छूं, इसको दूर से नमस्कार करूं, इसके साथ शेक हैंड करूं या हग करूं. हाउ शुड आई ग्रीट द पर्सन? दिमाग में चल रहा होता है ना. You are rationalizing at that point of time what should be your behavior. How do you rationalize that? उस टाइम पे आपके दिमाग में वो एक थॉट प्रोसेस जो चल रहा है, वो किस बेसिस पे चल रहा है? Based upon maybe your previous interaction with the person, based upon maybe what somebody told you about that person. आपके पिता माता जो घर से आपको लेके आए, या आप जब गए तो आपको किसी ने उनके बारे में कुछ बताया होगा. तो वो सब थॉट्स के बेसिस पे, या अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या अपने बिलीव्स के बेसिस पे, या आपकी अपब्रिंगिंग और वैल्यूज के बेसिस पे आप चीजों को रैशनलाइज करते हो, है ना. उस रैशनलाइजेशन प्रोसेस के बेसिस पे आप आगे इंटरेक्ट करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू गो टू सम ब्रह्म कुमारीज आश्रम, हाउ विल यू ग्रीट? ओम शांति. That's how you greet. If you go to some other place, let's say you go to Gurudwara, you say Sat Shri Akal. Yeah. So this is the way. How did you learn this? You learned it on the basis of your experience, your beliefs, your values, social norms, and the basic conduct which is going on around it. That is the rationalization process. This particular thing brings us to another definition of ethics. What is that? Let's write. Okay. It is a science. It is a science in the sense that, क्यों इसको science बोला मैंने? It is a science in the sense that it involves rational inquiry. It involves rational inquiry, but it is a normative science. But it is a normative science. ये साइंस है क्योंकि इसमें रैशनल इंक्वायरी है. यू ट्राई टू थिंक अबाउट थिंग्स. लिखिए, इट इज कंसर्न्ड विद वेरियस स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स. इट इज कंसर्न्ड विद, नॉर्मेटिव साइंस कहने का क्या मतलब? कंसर्न्ड विद वेरियस स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स, कॉमा, बिलीव्स एंड values,
experiences and expressions, इन सब के बेसिस पे क्रिएट हो रहा है. Experiences and expressions. That is what is evolving ethics. Okay. Then ethics deals with not how the world is today, not how the world is today, but the way it is ought to be, way it is ought to be. Okay. So that is ethics. एक और लिखिए. Ethics is a branch of philosophy. Yeah, it's also ऐसे लिखना चाहिए. Ethics is also a branch of philosophy which studies morality. Branch of philosophy which studies morality. Morality. That is right or wrong behavior. Right or wrong behavior. Okay. Within philosophy, ethics is studied under three dimensions. Within philosophy, ethics is studied under three dimensions. One is meta ethics, second is normative ethics, and third is applied ethics. Meta ethics, normative ethics, and applied ethics. Okay. Meta ethics deals with meaning of ethical terms. Meaning of ethical terms. कि जब कहें morality, तो क्वेश्चन आए, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज मोरालिटी? फिर आपको कोई एक डेफिनेशन देगा, है ना, कि मोरालिटी मीन्स दिस. तो व्हाट इज दिस? ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता जाए. So that in that case will be meta ethics. You try to explore the meaning of ethical terms in their true nature as much as possible. Okay. So ये एक basic process है meta ethics का. Normative ethics क्या होता है? So it deals with the study of ethical act. Study of an ethical act. अगर एक बंदे ने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर तरह से बिहेव किया, क्यों किया? ठीक है, उसके पीछे जाता है. सो दिस बेसिकली डील्स विद क्वेश्चंस लाइक व्हाट कंडक्ट इज डिजायरेबल इन अ गिवन सिचुएशन. What conduct is desirable? See, I'm using the word desirable again. In a given situation. Then there is applied ethics. Applied ethics. So इसमें जो core concern है वो क्या है? So how can people achieve moral outcomes? How can people achieve moral outcomes in a particular situation? Moral outcomes in a particular situation. Particular situation. और स्पेसिफिक सिचुएशन. नॉर्मेटिव और अप्लाइड में बेसिक सा फर्क इतना है, नॉर्म वी ट्राई टू से कि आमतौर पे क्या करना चाहिए, अप्लाइड एक स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या करना है. ठीक है, तो नॉर्म में गाइडलाइन होगा, स्टडी ऑफ एथिकल एक्ट्स करके हमें कुछ नॉर्म्स बना लेंगे. ठीक है, और अप्लाइड एथिक्स में हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सोचेंगे कि अब क्या करना है. नॉर्म्स तो हमारे पास बहुत हैं, प्रिंसिपल्स तो हमारे पास पहले से गिवन है, व्हाट शुड वी डू इन दिस पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन. ठीक है, तो दैट इज द एस्पेक्ट बिटवीन द अप्लाइड एथिक्स. अब इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आमतौर पे केस स्टडीज के साथ रिलेटेड है.
ठीक है. So the concern within meta ethics is meaning of ethical terms. The concern with the normative ethics is studying various ethical acts and then basically building norms. ये होना चाहिए. That is what is desirable आमतौर पर. ठीक है. And in the applied ethics, we try and do or reach basically an moral outcome, or how can people reach a particular moral outcome? The process. Okay. And that's where the case studies are. This is basically the various dimensions of ethics that we study in philosophy. और यूपीएससी में भी हमें ये तीनों डायमेंशंस टाइम टू टाइम यूज करनी पड़ती हैं. हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर ये तीनों डायमेंशंस आती हैं. लेकिन इन सब को समझने से पहले एक और बेसिक चीज है जो समझनी बहुत जरूरी है. अगर वो समझ आएगी तो आगे काम हो पाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है. 3 बेसिक टर्म्स हैं: बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स. पहले ये समझना है कि क्या होता है. ठीक है. सो अगर मैं बिलीफ के बारे में बात करूं तो जब आपको कुछ बोला जाता है कि यार मंगलवार को सिर नहीं धोना, तो आप क्या सोचते हो? माँ से या पिताजी से पूछते हो इसका लॉजिक क्या है? हाँ जी, श्रुति, महिमा, और कोई ऐसा विचार आपके घर में चलता हो? वीरवार को कपड़े नहीं धोने, मंगलवार को बाल नहीं कटवाने, ऐसा कुछ होता है ना? छोटी छोटी बातें से बोलते रहते हैं. या सो या फिर शिव जी भगवान के ऊपर जब आप शिवलिंग पे वो जल चढ़ाते हो उसका भी कुछ टाइमिंग होता है शायद, इसके बाद नहीं चढ़ाना. There are like this, there are various beliefs, there are religious beliefs, there are superstitious beliefs, there are social beliefs, there are n number of and kind of beliefs which are going on. Yes or no? Now these beliefs at a conscious level अगर सोचा जाए या रैशनैलिटी के लेवल पे अगर सोचा है कि भाई इसमें दिमाग लड़ाया गया था या नहीं, थोड़ी बहुत सेंस बनती है या नहीं, उस लेवल पे अगर सोचा जाए, सो वो कितना है? So are they at the level of consciousness, or how thoughtful were you when you talked about it? So beliefs from that point of view are unconscious. Unconscious. हमने कोई दिमाग नहीं लड़ाया, जैसे थे वैसे एक्सेप्ट कर लिए. So they are accepted as given or transmitted. हम उनको क्वेश्चन नहीं करते. ठीक है. जैसे होते हैं बस वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, या बोलते हैं कि नहीं हम नहीं मानते. ऐसे ही है ना? Either you accept or reject, but you don't question, because at the level of consciousness they are unconscious. You don't think about them, you don't try to make any rational thing about it. Clear हो गया? Hello. Yes, sir. So यहाँ पे लिखिए does not involve rationalization. Does not involve rationalization or mean and correlation or thinking for that matter. कोई सोच इसमें इन्वॉल्व नहीं है. Either you accept as given or you reject as given. मैं नहीं मानता या मैं मानता हूं, बस ये है बिलीफ. अब इस बिलीफ का ओरिजिन कहां से होता है? हाउ डू दे ओरिजिनेट? या इसका बेडरॉक क्या है? इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? सोच के देखो. एनी बिलीफ, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस. मंगलवार को सिर नहीं धोया, किसी ने गलती से धो भी लिया. शेव नहीं करनी, अच्छा किसी ने गलती से कर भी ली. What happens? The only trouble that you're going to have is within yourself. It is the conscience part.
That is going to come and hunt you. अरे माँ ने बोला था ये नहीं करना लेकिन मैंने कर लिया, ओह गलती हो गई. Nothing physically is coming to you at that moment कि सिर धो लिया तो बाल झड़ गए. ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना. या नॉनवेज नहीं खाना होता मंगलवार या वीरवार को, तो खा लिया तो पता नहीं पेट खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा. It is only at the conscious or at the level of conscience that you're feeling that you did something wrong. So the entire origin or the expression or the you can say justification or the bedrock from which it is coming to you, इसको moral grounding बोलते हैं, ठीक है. So that is your conscience only. It's not coming from anywhere else. It is coming from your conscience. Sometimes within the society, the entire conscience will spread and it will be multiplied and everybody will take up the same conscience, and that's what we call as the social conscience. Yes or no? सारी सोसाइटी एक ही तरह के बिलीफ्स लेके घूम रही है, तो हम बोलेंगे इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल कॉन्शियस. ऐसा बोलते हैं ना. ऐसे ही सारी इकोनॉमी एक ही तरह की बिलीफ लेके घूमे तो बोलेंगे इकोनॉमिक कॉन्शियस. सारी गवर्नमेंट एक ही तरह के बिलीफ सिस्टम पे काम करे तो बोलेंगे पॉलिटिकल कॉन्शियस. समझ आ रहा है? लोग. Yes, sir. So this conscience is going to express itself at various levels. So it can express itself at a social level, at a political level, at an economic level, at a national level, at an international level, whatever level. It can express itself. It expresses itself at a level of gender, various things. लड़का होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए, blah blah, जो भी. All those things are somewhere being expressed. This conscious is getting expressed at various levels, etc. levels. Okay, and this is becoming massive. Why? Because essentially they are getting more and more accepted. Without questioning, they are getting more and more accepted. That's why we are taking up a particular belief system. Once that belief system becomes so omnious, so much present everywhere, then we start calling it to an extent religion. Yes or no? आया ना. बहुत सारे लोग एक ही तरह का बिलीफ सिस्टम लेके चल रहे हैं. We start calling it religion. Hinduism, Christianity, Islam. So when it starts becoming expressed at a social, political, economic, cultural, various levels by a massive section of population, we start calling it religion. So that's where the beliefs, or sometimes you call it religious beliefs also, so they manifest themselves like this. Okay. Next जो level है, that is values. Now values, they come from a semi-conscious kind of a state. The basis of conscious जो दिमाग लड़ाया गया वो सेमी कॉन्शियस है, फुली कॉन्शियस नहीं. कुछ लेवल तक दिमाग लड़ाया, 100% नहीं लगा पाए. ये सेमी कॉन्शियस लेवल तक जब हम दिमाग लड़ाते हैं, कुछ वैल्यूज हमारी होती हैं पर्सनल वैल्यूज, जो हमने पर्सनल लेवल पे दिमाग लड़ाया और कुछ वैल्यूज अपनी अडॉप्ट कर ली. कुछ वैल्यूज हैं सोशल वैल्यूज, जो हमें लगा कि सोसाइटी में ठीक ठाक चीजें चल रही हैं और हमें भी एक्सेप्टेबल लगते हैं, हम उनको उठा लेते हैं, एंड देन वी कॉल देम सोशल वैल्यूज. सो दीज कैन बी कॉल्ड एज इंडिविजुअल आल्सो फॉर दैट मैटर. ठीक है. अब बेसिकली जो इनकी जस्टिफिकेशन है, जो आपने दिमाग लड़ाया, जो एनालिसिस है, वो किस लेवल पे है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है इनको एज पर्सनल और सोशल. अगर ये इंडिविजुअली जस्टिफाइड ही हैं, बस अभी आप ही को ठीक लग रही हैं और आप अपने लेवल पे इनको अप्लाई या यूटिलाइज कर रहे हो, तो देन दे आर पर्सनल इन नेचर. अगर ये पूरी सोसाइटी के लेवल पे ऐसे ही चल रहा है तो देन दे आर सोशल वैल्यूज. ओके, सो आइडेंटिफाइड and justified by self.
So they are like personal values. Like for example, Gandhi. Today we call them Gandhian values, or Gandhian morality, or something Gandhian. That at some point was only related to Gandhi. Later, people started justifying that in a broader social context. And that's when they become the Gandhian values. And then the society started adopting them. So if they are identified and justified by the society, entire society, then we call them social values. Okay. So identified, हमें पता चल गया कि हाँ ये है कुछ truth, justice, etc. And justified कि हाँ ये सही भी है, ऐसा होना चाहिए by society. इसी तरह अब आप चाहे पॉलिटिकल वैल्यूज लिख लो, चाहे इकोनॉमिक वैल्यूज लिख लो, चाहे कल्चरल वैल्यूज लिख लो, तो आपने वहां पे बस एक वर्ड का चेंज आता रहेगा, आइडेंटिफाइड एंड जस्टिफाइड बाय सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, culture, etc. So in that sense, these values can just go on, political values, for example, when we call them. So बाकी सब ये सेम रहेगा, identified and justified by कौन आ जाएगा, polity. If you try to create economic values, then identified and justified by economy. Simple. Same thing here. Okay. Then cultural values, national values, moral values. Identified and justified by culture. Okay. Let's extend it a bit further. See, in ethics, one thing I'm going to do. While you are studying ethics now, I'll automatically improvise your answer writing. So I'll tell you how to think about things. So cultural values. Okay. Now, moral values. Where do they come from? By morality. Identified and justified by morality. We'll understand what is morality. Okay. So in this fashion, n number of values can be there. There can be personal, social, political, economic, cultural, moral, n number of values are going on. And all of them are identified and justified by something, and that's what creates them. थोड़ा बहुत दिमाग लगा, लेकिन यहाँ पे 100% रैशनलाइजेशन करने की हम कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो एक वैल्यूज हैं और हर बंदा अपने दिमाग के हिसाब से उनको लेके चलेगा. ये बात क्लियर हुई? कुछ चीजें मुझे वैल्यूएबल लग सकती हैं. अगर मैं इस वर्ड वैल्यू का सिंपल मतलब निकालूं तो वो क्या है, इंपॉर्टेंस. तो हो सकता है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगे, वैल्यूएबल लगे, किसी दूसरे को ना लगे. Maybe at an economic level, political level, social level, whatever level, maybe I find something important and the other person doesn't. I find something valuable, the other person doesn't. So they will change. That's why they are semi-conscious. There is no science of values particularly. It is what you feel. Yeah. So the next aspect is norms. मैं इसको उठा के थोड़ा साइड में लेके जा रहा हूँ, आप देख लो आपने कैसे करना है. ज़्यादा ही बड़ा होगा. Okay. Fine. So norms are something which are fully conscious. At the level of thought, they are fully conscious. Here there is no doubt. Here the rationality is absolute. Absolute. Halaki we know that it cannot be absolute, but as much as possible, bounded rationality, maximum possible rationality, absolute or maximum possible. लिख लो साथ में. अबैड वाले स्टूडेंट को ना एब्सोल्यूट रैशनैलिटी से बड़ी चिढ़ है, क्योंकि होती नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती. So maximum possibility or rationality is absolute, or maximum possible rationality is there. Okay. So in that sense, हम जितना दिमाग लड़ा सकते थे हमने लड़ा लिया, कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन को चुनने से पहले. ठीक है. उसके बाद नहीं हम ज्यादा उसके साथ ज्यादा फिडल नहीं करते.
So maximum possible thing we try to reach, and then that's that. Okay. Then now these norms, that something that we call as fully rational. Essentially, they are something that we need. इनका जो बेसिस या ओरिजिन है वो क्या है? इनका ओरिजिन है हमारी एनालिसिस और हमारा कंसेंसस. मैं पीछे वैल्यूज का भी ओरिजिन एक डिस्कस करता हूं अभी, ये कारण है क्यों छोड़ा गया. अब जैसे इसका ओरिजिन मैंने बताया, बिलीव्स का ओरिजिन है कॉन्शियस. फील कहाँ होते हैं बिलीव्स? कॉन्शियस में फील होते हैं. वैल्यूज कहाँ फील होते हैं? ये सारी की सारी वैल्यूज दे आर अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस. जो आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट कब लगती है? जब आपको इन एक्सपीरियंस उसके साथ कुछ गुड फीलिंग अटैच हो जाए. और अनइम्पॉर्टेंट कब लगती है? जब उसके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है. सो द बेडरॉक फ्रॉम वेयर दे कम, all the values that you have is from your experience. Some people have had a bad experience with democracy. Ask the people of Afghanistan. So they don't value the political aspects or the political value of democracy at all. For them, autocracy was much better. Can I say that? Yes. Hello. Yeah. Some people at the same point of time, if you ask the women who were burnt as sati back in medieval India, they don't value those kind of social values much. For them, it was a very bad experience. The people who have been facing the atrocities of caste or bias with respect to caste, the SCs and the STs and the OBCs, or the minority sections in India, for them, various social values have a very bad experience. Yes or no? Various cultural values might have a very bad experience for people of religion, for people of language, for people of ethnicity. That's why there is trouble going on in terms of internal security in Northeast. So it's the value narrative is entirely based upon your experience as a society, as a person, as a class. Your experience is what creates values, or what attaches importance to some things while detaches importance from some other things when you experience them. So the bedrock of these values is experience. Okay. The bedrock of norms, or the origin of norms, is based upon consensus and analysis. That's where the norms originate from. हम कहते हैं कि ये करना नॉर्म है, आमतौर पे ऐसे किया जाता है, आमतौर पे ऐसे करना चाहिए. ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है? कंसेंसस और एनालिसिस. या तो बहुत सारे लोग उस चीज से सहमत है कि हाँ ऐसे ही करना चाहिए, या विद रिस्पेक्ट टू एनालिसिस हमने कुछ पहले ऐसा करके देखा था, हमें अच्छे रिजल्ट्स आए और फिर हम उसके बाद वैसे ही कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, carbon dioxide is to be produced by mixing carbon and oxygen. That's the best way to form carbon dioxide. Yeah. So through analysis, we have reached this conclusion. So you take up carbon, you just burn it in the air, carbon dioxide is produced. Very simple, efficient way to produce carbon dioxide. If you want to produce oxygen though, there's a difficulty. You have to plant something. Okay. So herein, that's the analysis, that's the consensus we reach. So on the one hand, afforestation or plantation of tree, if you want to have more oxygen. On the other hand, if you want to have more carbon dioxide, burn the trees. So this norm we reached, or this is the environmental norm that we reached through consensus and analysis over a period of time. Yes or no? But sometimes, for example, now when you go to a traffic signal, there is a red light. What is the norm? That we have to stop. Universally, it is like this. Yes or no? Some Yes. countries, they have red, amber, and green. In some countries, they have a red, blue, and green combination. But universally, red means stop. But now, let's say you stopped at the red light and the ambulance has come from your back.
What do you do now? You give way to the ambulance, cross the red light, or you don't. We should, but we don't. So there is a dilemma. But generally, the norm is you should. You should give way to the ambulance. Yes. So that's where the norm changes. So when we say there is something fully conscious, it should not change. If it is 100% rational, it should not change. But then norms are not fully conscious or absolutely rational. We go into a 99% rationality, 99% plausible rationality. But there can be a change in the norms with time, with context. Sometimes we have to change them. Sati was a norm back in the day. We changed it. Child marriage in India was a norm. We changed it. Polygamy was a norm. We changed it. एक राजा की 100 रानियां हैं, ऐसा कुछ चल रहा था. We changed it. So something which is a norm today can change tomorrow. It's not permanent. Maybe the consensus and analysis today states that it is good enough for universal acceptance, but maybe in future it changes. Okay. Why it changes is when we try and reach this rationality, consensus, analysis, we can't go 100%. There is absolute limitation, but without norms, the society cannot function. That is why we try and reach consensus fast. ठीक है. So यहाँ पे नेचर ऑफ नॉर्म्स के बारे में एक कमेंट्री नीचे लिखे. अभी ये इस डायग्राम से बाहर आ जाते हैं. एक चीज लिखिए यहाँ पे. Despite we intend to create universal norms, with maximum possible rationality, yet they can be contextual. And may have to change with the situation. This is because the society cannot function without norms. And some level of justification is applied. Underline the word justification. Some level of justification is applied to fortify some norms, so as to make the society functional. कुछ लेवल ऑफ जस्टिफिकेशन करके हम बोलते हैं ठीक है चलने दो फॉर अ वाइल. ठीक है. क्योंकि 100% जस्टिफिकेशन हो नहीं पाती, 100% कंसेंसस नहीं हो पाता, 100% रैशनैलिटी नहीं हो पाती, पर नॉर्म्स तो चाहिए. अब जब तक हम आम जनता को ये बताएंगे नहीं कि भाई रेड लाइट पे रुकना होता है, ऑरेंज पे ध्यान रखना होता है कि रुकने का टाइम है, चलने का टाइम है, ग्रीन पे चलना होता है, ये एक नॉर्म तो कल्टिवेट करना पड़ेगा ना किसी लेवल पे. ट्रैफिक नॉर्म्स है ना. तो फिर ही तो हम आगे ट्रैफिक मैनेज कर पाएंगे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट कर देंगे. वी कैन क्रिएट अवेयरनेस विद द पीपल कि भाई पीछे से कोई आ जाए तो जगह भी देनी. इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट. टू एन एक्सटेंट इट इज, बट इन स्पेसिफिक सिचुएशंस it can be violated. That's an awareness about that norm which you can generate over a period of time. So it's not like this कि कोई 100% absolutely rational norm बन गया. मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ. जस्टिफिकेशन के बेसिस पे नॉर्म्स को डिफरेंशिएट किया जाता है. तो देखिए नेक्स्ट, बेस्ड अपॉन द काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन और द नेचर ऑफ जस्टिफिकेशन, based upon the nature of justification,
there can be various kinds of norm. There can be various kinds of norms. First, social justification leads to social norms. Social justification leads to social norms. Yes. Then next, अब आप जितनी मर्जी बना लो. Legal justification leads to legal norms. Political justification leads to political norms. Ethical justification leads to ethical norms. Moral justification leads to moral norms. Yes or no? But then nothing is fixed. Even if it is a moral norm, it is not fixed. Now, it being unfixed or it being not 100% rational leads us to another dimension about ethics itself. Okay, so देखिए इसके बारे में समझते हैं अब क्या है. Let's come to, within this particular debate, let's come to some other angle. Let's go to morality. You know, when we say moral, this basically emerges from a word called as mores. This mores is nothing but norms. You can think of it as more allowed. Moral, more allowed as compared to other kinds of behavior. Okay, so these norms itself essentially generate certain kind of moral behavior or morality, and then this moral, whatever is moral, is also divided into two parts. One is called as moral realism, and the other is called as moral relativism. Moral realism and moral relativism. इस तरह से इसको दो एस्पेक्ट्स में देखा जा सकता है. ठीक है, तो जब मैं बोलूं मॉरल रियलिज्म तो इसका मतलब क्या है, ये किस चीज में बिलीव करता है. लिखिए moral realism के नीचे लिखिए the belief that there are moral facts. It's a belief. Moral realism, it's not a fact, it's a belief. It's not at a conscious level that you did. Okay, believe that there are moral facts such as or as good as scientific facts. As good as scientific facts. कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, अगर ये बिलीव किया जाए तो ऐसी आइडियोलॉजी को बोलते हैं मॉरल रियलिज्म. ठीक है, in this view moral proposition can only be true or false. Moral proposition can only be true or false. There is nothing in between. There is no gray area. It's black and white. Okay. However, आगे लिखिए, however, if there are moral facts, अब मेटा एथिक्स वाले क्या बोलेंगे, अच्छा कहां से लेके आए moral facts? If there are moral facts, where do they come from? What's the origin? Are these moral facts testifiable? Are these moral facts testifiable? Falsible? And if so,
And if so, why there is no consensus? Why there is no consensus on what is moral and what is not? अगर ऐसा है कि मॉरल फैक्ट्स वाकई में एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर 100% कंसेंसस आम जनता में क्यों नहीं है कि हाँ भाई मोरालिटी इज दिस? ऐसा कोई एक एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से तो कुछ कह नहीं रहा. This is known as the grounding problem in ethics. This is known as the grounding problem in ethics. It is a search for a foundation. It is a search for a foundation for our moral beliefs. हम जो भी मानते हैं किस पर आधारित है? That is the grounding problem. It is a search for a foundation for our moral beliefs. Something solid that will make them true. Something solid that will make them true. In a way that is clear, objective, and unmoving. Clear, objective, and unmoving. Okay. And if one cannot ground morality, अगर ये नहीं हो पाए, if one cannot ground morality, it leads to moral anti-realism or relativism. और relativism, अगर हम उसको एक फर्म ग्राउंडिंग ना दे पाए तो फिर वो अपने आप में रिलेटिव हो जाता है कि कुछ सिचुएशन में ऐसे कर लो, किसी और सिचुएशन में अपनी मर्जी कर लो. दैट इज मॉरल रिलेटिविज्म. तो लिखिए, दैट इज देयर आर नो मॉरल फैक्ट्स. दैट इज रिलेटिविज्म. फैक्ट्स नहीं है, फैक्ट तो फिर चेंज नहीं होता. तो दैट इज there can be more than one position on a topic. There can be more than one position or stand on a topic, debate, dilemma, issue. एक से ज्यादा स्टैंड्स लिए जा सकते हैं, एक्सेट्रा. ओके. फॉर एग्जाम्पल, कल्चरल रिलेटिविज्म. शायद आपने ये टर्म सुनी हो, कल्चरल रिलेटिविज्म. ऐसा क्यों कहते हैं? जैसे कि इंडिया में कुछ चीजें सोशली एक्सेप्टेबल हैं, शायद अमेरिका में ना हो. वाइस वर्सा, कुछ चीजें अमेरिका में एक्सेप्टेबल हैं, इंडिया में ना हो. तो कल्चर डिफरेंट है दोनों कंट्रीज का. इस वजह से मोरालिटी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर रही है. बात समझ आई? हेलो हेलो. Yes, sir. Okay. Further, even if moral relativism cannot answer a particular situation, ऐसा है नहीं तो वैसे कर लो, अगर उससे भी बात ना बने. Even if moral relativism cannot answer a particular situation, then it will lead to moral anti-realism. Moral anti-realism. This is the third degree. फर्स्ट डिग्री है रियलिज्म, फैक्ट है.
सेकेंड डिग्री है रिलेटिविज्म, चलो थोड़ा बदल के देख लो सिचुएशन के हिसाब से। थर्ड डिग्री है एंटी रियलिज्म। ये क्या मतलब? दैट इज एवरी सिचुएशन, in every situation or every moral situation, one can have a different interpretation. That is, in every moral situation, one can have a different interpretation. अपनी मर्जी करो, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देखो क्या ठीक लगता है। तो रियलिज्म के लेवल पे आज के दिन में क्या एग्जिस्ट करता है, जहां पे हम चीजों को फैक्ट मान के चलते हैं। हालांकि मान के चलते हैं वर्ड यूज किया मैंने, बिलीफ। बताओ, आज आप अपने आसपास नजर मारते हो, आपको ऐसी कौन सी चीज है जो रियलिज्म के लेवल पे एग्जिस्ट करती लगती है? यार ये तो ऐसे ही होता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। व्हाट डू यू थिंक हैज रीच्ड दैट लेवल? सम पर्टिकुलर moral value which has reached to this level? Are there certain values like this? Hello. Is there any moral fact left today? If I say right to life or to not kill, has it reached a stage of moral realism? So, can you repeat the statement? Which thing? Right to? The right to life or not to kill. Thou shalt not kill. It's a part of 10 commandments even in the Bible. Has it reached moral realism? No. Because we do kill. Yes. Time to time, the situation may vary. We justify killing also. We have death penalty. We have army, navy, air force. We have armed guard. So we do kill. In America, people kill just for fun. Every week almost, you are hearing somebody just goes to a mall, a school, a church, and open fires. So even life itself, or the right to life, or thou shalt not kill, despite it being written in the Bible, it is not moral realism. It's only relativism. In some situations, it's okay to kill, and in other situations, it's not. That's where it is, relativism. Most of the things that we are doing as a society today, they exist in this area, moral relativism. And in some areas, we are even reaching anti-realism. Nothing is predefined. Just give a particular situation a look and in a fresh manner. For example, president giving pardon to somebody who has been served with death penalty by the Supreme Court. At that point of time, president is not acting out of moral relativism. He is acting out of moral anti-realism, isn't he? Because he is trying to look at that particular situation from a fresh angle. He can have altogether different interpretation. What the Supreme Court reached based upon evidences, based upon the case hearings and everything related to it, can just pardon somebody from death sentence. That's the power of the president. And in that power, what he is exercising actually, the kind of morality is moral anti-realism. Don't you think? Hello. Yes, मजेदार है ethics? Yes, sir. Okay. So essentially, So why would UPSC include such a subject as in like this ethics? it's very important, don't you think? We should have a thought process of a mature person. Important. I mean, it is basically to develop the thought process, right? Correct. That's why I'm not teaching ethics. I'm only developing your thought process. जो इसमें लिखने का काम है ना, मैं दिखाता हूँ आपको. Because there is no as such like no ये रजिस्टर है, information or general knowledge here. छोटा सा रजिस्टर है, 50-60 रिटन पेजेस का. अगर पूरे एथिक्स के नोट्स लिखने हो तो ये एक बैच का है,
ये एक और बैच है जो मैंने फिजिकल बैचेस पढ़ाए थे ना अपने में, देखो ये भी उतना सही है ना? तो दैट्स इट। तो इनमें अब जब पढ़ने बैठते हैं ना, जो लिखने का काम है एथिक्स में उतना नहीं है, समझने का काम ज्यादा है। जो सिलेबस में टर्म्स दी हैं वो सारी जब आप लिख के नोट्स में भी आ जाएंगी, तब भी इतना काम नहीं है लिखने का। काम इसमें समझने का ज्यादा है, थॉट प्रोसेस बिल्ड करना है। आपने अब कितने पेज लिखे? अभी तो कुछ खास नहीं सर, मुश्किल 4 से पेज 1 पेज। हाँ। है ना, 2-4 पेज लिखे होंगे, लेकिन डिस्कशन करते हमें 1 घंटा हो गया। सो ये ऐसा ही सब्जेक्ट है, इसमें आपको थॉट प्रोसेस बिल्ड करना है, बार बार इन लेक्चर्स को सुनना है, पढ़ना कम है, ठीक है? ठीक है सर। सो कमिंग फॉरवर्ड लिखिए। अब एथिक्स पे आते हैं। हमें बिलीव्स, नॉर्म्स, वैल्यूज की काफी समझ लग गई। अब नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एथिक्स। व्हाट आर वी स्टडीइंग? तो लिखिए, ethics is generally related to theory. Ethics is generally related to theory, while morality, अब क्योंकि आपने morality पढ़ा तो मैं उसके आगे चल रहा हूं, morality is generally related to practice of ethics. अब जो यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है ना, स्टडी प्रोवाइड कर रहा है, वो है एथिक्स, ठीक है? Thus, ethics may also be called as theory of morality. Theory of morality, whereby there is an attempt to understand moral concepts, whereby there is an attempt to understand moral concepts and justify moral principles. This is basically the grounding thing. Understand and justify. Understand moral concepts and justify moral principles. Swami Vivekananda, in terms of or in context of evolution of morality, Swami Vivekananda, in the context of evolution of morality, said that, quotes में लिखना है, we know that as knowledge comes, comma, person grows. As knowledge comes, person grows, comma, morality is evolved. Morality is evolved, comma, and the idea of non-separateness begins. Idea of non-separateness begins. Full stop. Whether men understand it or not, comma, they are impelled by that power behind, to become unselfish. Stop. That is the foundation of morality. Full stop. It is the quintessence of all ethics. Comma, preached in any language,
is the quintessence or basic essence of all ethics preached in any language, comma, or any religion comma, or by any prophet in the world, or by any prophet, prophet, in the world. ये स्वामी विवेकानंद के वर्ड्स हैं। इसका बेसिक मतलब क्या है? इसका मतलब है यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन, अगर मैं दो शब्दों में कहूं तो। हाँ जी। Can you please repeat the starting? It is. Okay, I'll repeat it from the very beginning. We know that as knowledge comes, person grows, morality is evolved, and idea of non-separateness begins. जैसे जैसे ज्ञान आता जाता है, आदमी या इंसान की सोच बढ़ती है और उसको ये पता चलता है कि मैं और मेरे साथ रहने वाले लोग अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं. Whether men understand it or not, they are impelled by that power behind to become unselfish. चाहे हमें इसकी समझ आए कॉन्शियसली या ना आए, लेकिन किसी एक लेवल पे पीछे से एक आवाज हमेशा आती रहती है कि यार किसी के लिए कुछ करो. Become unselfish. That is the foundation of morality. It is the quintessence of all ethics, preached in any language or any religion or by any prophet in the world. लिखा गया? यशदीप? Sir, it is के बाद आप क्या बोल रहे हैं? It is the quintessence. QUINTESSENCE. Quintessence of all ethics, preached in any language or any religion or by any prophet in the world. Okay, sir. Okay, thank you. Okay. So there is a basic idea of oneness in the entire statement. What he is trying to tell you is कि हम सब एक हैं, और इस वजह से जैसे जैसे हमें ज्ञान बढ़ता जाएगा सोशल लाइफ के अंदर, एथिक्स, मोरालिटी, ये सब का ज्ञान आएगा, तो हमें ये एहसास बढ़ता चला जाएगा कि वी आर ऑल वन. So there will be a drive to become unselfish, to do something for somebody else also. Service to mankind was one of the basic things which Swami Vivekananda preached. And in this statement also, he's trying to create a foundation for the state. And that he also says is also the foundation of morality. Service to mankind. यहाँ से बनता है उसका जो आगे का dialogue है. ठीक है? So आगे लिखिए. Morality is also said to be individual ethics. Individual ethics. इंडिविजुअल क्योंकि एक इनर कॉम्पस के हिसाब से मोरालिटी काम करती है. हमें अंदर से एक आवाज आती है ना कि यार ये सही है और ये गलत है. दैट इज मोरालिटी. So morality is also said to be individual ethics. According to Habermas, Habermas, public administration का theorist है, Jürgen Habermas. So according to Habermas, ethics is concerned with good life. Ethics is concerned with good life. See, you call something good or bad based upon what is socially desirable or undesirable. If something is called good, that means it is socially desirable. Okay? आगे लिखिए. Ethics is concerned with the good life, and morality is concerned with the right conduct. Right conduct. Okay. Some things you feel are good. Some things you feel are right. There is a difference between the two. Yes or no? Guru Nanak was not considered as good by the government of the day. Same was the case with Guru Arjun Dev. Same was the case with Guru Gobind Singh. These three fellows were not considered good by the government of the day and by the general Islamic population also.
But were they right or wrong? Hello. They Sumedha? were right. right. They were right. Yes. So what may or may not be good, will that decide whether they are right or not? No, not essentially so. So good and right are different things. Okay. आगे लिखिए. Overall, ethics and morality are integral to human life. Ethics and morality are integral to human life, and one cannot envisage a life without moral values or bereft of moral values. One cannot envisage life bereft of moral values. Hyphen डाल के लिखिए. Socrates' dictum in double inverted commas आगे लिखना है. Unexamined life is not worth living. Socrates' dictum, an unexamined life is not worth living. ये कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखा रहा हूँ. पेपर में नहीं लिख के आए तो कोई फायदा नहीं. कॉमा डाल के आगे लिखिए. aptly encapsulates or includes the importance of ethics in human life. The importance of ethics in human life. चाहे गुरु नानक सही थे, गुरु गोविंद सही थे, गुरु अर्जुन देव सही थे, बट क्योंकि उनको गवर्नमेंट ऑफ द डे ने गुड कंसिडर नहीं किया, तो सिखिज्म आज एक माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है. सिख धर्म के अंदर बहुत अच्छी चीजें, बहुत रैशनलाइज्ड है. सब धर्मों में से अच्छी अच्छी चीजें निकाल के इसमें डाली गई हैं. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे भी इसको गुड कंसिडर कर लेता तो इसको बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सकता. आया ना? तो गुड कंसिडर होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि राइट होना जरूरी है. तभी वो सोशली वर्कआउट करेगा. ये पर्सनली बहुत अच्छा वर्कआउट करता है, या विद इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल बहुत अच्छा वर्कआउट करेगा. राइट, बीइंग राइट. सम पीपल आर वेरी राइट in so many situations, but those are the people that you hate the most. Happens with you? It's good. Sometimes your elder siblings or your parents. Yeah. In that moment, them being right is not being good for you. Happens or not? Okay. चलिए आगे देखते हैं. Now next हेडिंग, ये बेसिकली हमने कंपेयर किया एथिक्स एंड मोरालिटी. इन दोनों को कंपेयर कर लिया हमने. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एथिक्स एंड लॉ. Ethics and law. How are they correlated? So लिखिए, ethics are closely related to law. Ethics are closely related to law. Many laws are instituted. Many laws are instituted to promote social well-being, or human well-being, comma, social harmony, and resolve conflict of interest, just as morality does. Many laws are instituted to promote social well-being, social harmony, and resolve conflict of interest, just as morality does.
ethics may evaluate the laws to be good or bad. Ethics may evaluate the laws to be good or bad. For example, pre-independence India had laws permitting slavery, racism, oppression, discrimination, etc. Yes or no? So which we are trying to now evaluate based upon the constitutional ethics and get them declared as ultra vires. Yeah, okay, which are now being put under judicial scrutiny. And judged as ultra vires. Ultra vires मतलब constitution के हिसाब से नहीं है. Just as ultra vires on the basis of constitutional ethics. Constitutional ethics. All right. Next paragraph. Laws differ from ethics in a sense that laws differ from ethics in a sense that laws impose physical sanctions. Laws impose physical sanctions while ethics impose moral sanctions. Moral sanctions. लॉ के हाथ में डंडा है, तुम नहीं करोगे तो पिटाई होगी, जेल में डाल देंगे, फाइन करेंगे, कुछ भी करेंगे. कोर्सिव पावर है, दैट्स व्हाई देयर इज फिजिकल सैंक्शन. एथिक्स के हाथ में सिर्फ मॉरल सैंक्शन है, वो तुम्हें मन की आवाज या क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सोशली डिजायरेबल है, ये नहीं है. डंडा कोई नहीं आपके ऊपर, आप करो जो करना है, बाद में देखेंगे. इफ यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बिकॉज ऑफ योर एथिक्स, देन विल सी. तो लिखिए, however, if due to poor ethical behavior, a person is in conflict with the law or the established law. If due to poor ethical behavior, the person is in conflict with the established law, then that represents connivance between law and ethics. That represents connivance or the area of commonality between law and ethics. They exist in their different planes, but they also interact. Okay, Venn diagram बनाते होते हैं ना ऐसे. So this is the common space between law and ethics. Okay. Next. Important characteristics of ethics. Important characteristics of ethics. मैं जब ethics को देखता हूं तो मुझे क्या नजर आता है? That's the meaning of characteristics. So let's see. First, ethics cannot be shaped or sustained in isolation. अकेला एक व्यक्ति एथिकल है अपने आप में, ऐसा नहीं कह सकते. सोसाइटी के अंदर जब वो इंटरेक्ट करता है तब पता चलता है. ओके, बिकॉज ethics is what is socially desirable. Because ethics is
what is socially desirable. When a person interacts with the society, that's where ethics is relevant. पर्सनल स्पेस में, आइसोलेशन में तो ये वैसे ही इररेलेवेंट है. दूसरा, a man is not only a product but also a producer of his culture and ethics. A man is not only a product but also a producer of his culture and ethics. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है एथिक्स बनाने की? मैन हिमसेल्फ. थर्ड, ethics depend on context. Ethics depend on the context. किस सिचुएशन में बात हो रही है, जरूरी. Context in which they are operating. Fourth, ethics operate at different levels. Ethics operate at different levels. Individual, organizational, social, cultural, political, international, है ना? अलग अलग लेवल पे ऑपरेट कर सकते हैं. पांचवा, ethics are subjective in nature. मतलब कि फिक्स नहीं है, चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के साथ. Subjective in nature and are affected by one's emotions, means how you feel about something, and perception. Emotion and perception. How do you see things? How clearly do you see some things? That's your perception, your vision, your view. Okay? Based upon that, your ethics will change. Next, ethics are interrelated to each other. Interrelated to each other. It's a एक बंदा बोल रहा है कि मैं बड़ा जस्ट या फेयर हूं, बट एट द सेम टाइम वो झूठ बोलता है. तो ऐसा नहीं. अगर वो जस्ट या फेयर है तो वो फिर वो सच भी बोलेगा, कि सच बोलना अपने आप में जस्टिस है, अपने आप में फेयरनेस है. ठीक है? तो दे आर इंटररिलेटेड. ऐसा नहीं होता कि ऑन वन एंड वन सेट ऑफ एथिक्स आपके बड़े अच्छे हैं लेकिन सेकंड सेट ऑफ एथिक्स ठीक नहीं है. ऐसा नहीं होगा. इफ यू आर एथिकल, यू आर एथिकल. इफ यू आर नॉट, देन यू आर अनएथिकल. सिंपल. बहुत अच्छा पब्लिक सर्वेंट है, कभी कभी करप्शन भी कर लेता है. बहुत अच्छा पब्लिक सर्वेंट है, कभी कभी लेट पहुंचता है. ऐसा नहीं होगा. They are all going to be in line with each other. They are interrelated. If you are ethical, you are ethical on all counts. If you're unethical, you're unethical on all counts. It is not somewhere in the between, you know, not like that. Okay, 7. All ethics are values. All ethics are values. But all values may not be ethical. All ethics are values, but all values may not be ethical. Because a value describes what is desirable or undesirable. A value describes what is desirable or undesirable. That means they are descriptive in nature. They are descriptive in nature. While ethics are prescriptive in nature. जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, ये दवाई खानी चाहिए, like this. They are prescriptive in nature and prescribe what is right and good.
एंड गुड बोला मैंने, दोनों अलग अलग चीजें हैं, और नहीं बोला. What is right and good, so they prescribe it. Okay. Next, eighth characteristics. Ethic is not religion, law, pure science. Science और pure science कहने में फर्क है. Okay. It is not about following cultural norms. It is not about following cultural norms. It is not what we are feeling. It's not what we are feeling. तो ये भी क्लियर होना चाहिए. What ethics is not. Okay. So this is the various ways you can think about ethics. These are the various characteristics of ethics. Okay. Now, when we say ethics and morality, ultimately they are going to lead to some kind of a conduct, or social conduct for that matter. So इसके अंदर लिखिए next paragraph. Based upon, give a heading, okay, subheading, conduct. So based upon how a person, behaves at a moral level, based upon how a person behaves at a moral level, comma, it results into a particular conduct. बिहेवियर अलग होता है, कंडक्ट अलग होता है. जब हम ये बात करते हैं कि मॉरल बिहेवियर क्या था, तब हम बोलते हैं दैट इज कंडक्ट. सिंपली इफ इट इज बिहेवियर, इट इज बिहेवियर. व्हेन यू से moral behavior, then that's something which comes to conduct. So okay. In social sciences, attention is given to behavior. Attention is given to behavior. Whereas the ethicists seeks to discover how a person would conduct themselves in a moral situation. Would conduct matlab in future, in a moral situation, rather than studying the actual behavior of a human. Rather than studying the actual behavior of the human. Right now, in front of this camera, I might be behaving in a particular way. That's not the interest of an ethicist. His interest is, in future given situations, how would I be behaving? So they would want to study my conduct, not my behavior. Behavior is what it is right now. Conduct is how it will be in a given situation or in a given moral situation. So essentially, conduct is moral behavior. Got it? थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर. हेलो क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So that's, I think, sufficient for one day of moral science for you. बहुत ज्यादा अगर हम एथिक्स के बारे में चर्चा में एक ही दिन में कर लेंगे तो फिर बोरिंग होना शुरू हो जाता है कई बार. तो इसको कंक्लूड करते हैं. लिखिए. Thus, ethics is normative. नेक्स्ट पैराग्राफ लाके कंक्लूजन लिखते हैं. Ethics is normative and not empirical. Ethics is normative and not empirical, comma, और फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो. The basic concepts with which ethics deals
the basic concepts with which ethics deals are good and bad, comma, right and wrong, comma, duty and obligation, comma, justice and injustice, comma, vice and virtue, VICE, vice and virtue. So this is what ethics deals with, and that's what you will be dealing with in the next few days. All right. So that's it for today's lecture. Thank you. एक मैं आपके साथ बुकलेट शेयर करूंगा दैट इज फ्रॉम नीति आयोग, स्ट्रेंथनिंग एथिकल वैल्यूज के ऊपर है. दैट इज अ वेरी गुड बुकलेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि नीति आयोग ने अपने लेवल पे उसको समराइज किया, और ये तब किया गया जब यूपीएससी में एथिक्स ऑलरेडी आ चुका था एज अ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू. उसके 3-4 साल बाद this particular booklet is used at various levels of training in Labasana also. So it is good कि आप इसके थ्रू बेसिक टेक्स्ट पढ़ें. मार्केट में ना 10 तरह का कंटेंट पड़ा है एथिक्स को लेके. मेरे पास बहुत सारी किताबें, कोई फायदा नहीं. डोंट रीड फ्रॉम देम, दे विल नॉट फेच यू मार्क्स. लेक्सिकॉन की किताब आती है, 15 तरह की और किताबें आती है. दे आर नथिंग मोर देन कॉपी पेस्ट फ्रॉम हियर एंड देयर, बिकॉज बॉस्ड अप इधर उधर से इंटरनेट से जिसको जो मिला सबने उठा के किताबें बना दी. No use. Read the original content, that is always useful. ठीक है. तो मैं जो आपको लिखवाऊंगा और एक बस वो बुकलेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा एथिक्स की, जो मैंने आपको अभी बोला नीति आयोग की, छोटी सी किताब है, पीडीएफ है एसेंशली. तो बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना पढ़ने के लेवल पे. बाकी सब प्रैक्टिस है एथिक्स के अंदर. ठीक है. So we'll continue from this tomorrow.